Commission of India. It's indeed our pleasure to welcome Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji. Please welcome, sir. Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey ji. Secretary Department of Empowerment of PwD, respected Shri Rajesh Agrawal ji. National Icon PwD, respected Dr. Neeru Kumar ji. Senior Deputy Election Commissioner Shri Dharmendra Sharma ji. Special Officer, Election Commission of India and CEO Delhi, Shri Ranbir Singh ji. Senior officials from various departments and ministries, All India Radio, our PwD icons from states and UTs. Some of them are present here and some of them are joining us virtually. And all other guests present here, we welcome you all in this special program, in this conference. And may I now request Senior Deputy Election Commissioner Dharmendra Sharma ji to kindly welcome our chief guest of today's program, Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, by presenting a memento. Ladies and gentlemen, this memento is basically a coffee painting, in fact, created by Amita Datta ji. I request Dharmendra Sharma sir to please present a memento to Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey sir. I'll now request Special Officer Election Commission of India, Shri Ranbir Singh ji, to kindly present a memento to Senior Deputy Election Commissioner, Shri Dharmendra Pradhan ji. I request Shri Ranbir Singh ji to please welcome National Icon PwD, Padma Shri, Dr. Neeru Kumar ji, by presenting a memento. I would now request Director Accessibility Section, Ms. Dipali Masirkar ji, to kindly welcome Secretary Department of Empowerment of Persons with Disabilities, respected Shri Rajesh Agrawal ji, by presenting a memento. Okay, so ma'am is now presenting this memento to Special Officer Election Commission of India, respected Shri Ranbir Singh ji. Welcome to the program, sir. We welcome you all in this special conference. So, ladies and gentlemen, for the welcome address, may I request Special Officer Election Commission of India and CEO Delhi, Shri Ranbir Singh ji, sir. Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, Honorable Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey ji, Secretary, Department of Persons with Disability, Department of Empowerment for Persons with Disability, Shri Rakesh Agrawal sir, Senior DEC, Shri Dharmendra Sharma sir, and our National PwD icon, Dr. Neeru Kumar ma'am. All the Senior Deputy Election Commissioners, Deputy Election Commissioners, Director Generals, Directors, Principal Secretaries, Secretaries of the Election Commission of India, Mr. Freddy, the CEO from Meghalaya, who is specially present in this event, all the CEOs who are joining virtually from all over the country, the state icons from all the states, and officers from the DPWD, voters who have PwD voters, who are our most honored, most esteemed voters. They have come in large number to participate in this function. And friends from media and everybody who is present in this hall and who has joined virtually. It's a great privilege for me to welcome all of you. I especially welcome the Honorable Commission for being here in spite of the busy schedule, and this shows their highest commitment to the ideal of accessible election that is such a high value for the Election Commission of India. So it shows their deep commitment to the cause of
accessible election. I also welcome everybody else on the dais, especially our national icon, Neeru Kumarji, and also Secretary DPWD. Secretary DPWD has been very kind to us, and recently there was a meeting with the Election Commission, and as a follow-up of that meeting, a lot of collaboration is taking place, and I really thank him for all the effort that the DPWD is making in making elections more and more accessible. Thank you very much for coming, sir. I welcome everybody else, and I thank the team from the Accessibility Division. They have worked very hard day in, day out for last so many days. It's a small team, so under the leadership of Director Accessibility, Deepali. So I also thank Protocol Division and Sweep Division, IT Division, Media Division. They all have contributed a lot. And I welcome all of you once again to this important conference. It is the first of its kind. We have not had a specific national conference on the PwD icons so far. So it is really a pioneering work, conference. Once again, welcome all of you. Thank you. Thank you, sir, Shri Ranbir Singh ji, for the welcome address. समूचा राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, और भारत की पूरे विश्व में जो एक छवि है उसमें ये पक्ष मुख्य रूप से सामने आता है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। तो उस दृष्टि से अगर बात की जाए तो संविधान के हमारे निर्माताओं ने भी इस बात को बार बार रेखांकित किया था कि देश के सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार जो हैं वो मिलें और सुरक्षित हों, जिसमें मतदान का अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत का निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस मतदान के अधिकार का लाभ मिले, जिसके लिए जैसा कि आप जानते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। आज की ये कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक पड़ाव है। And now, ladies and gentlemen, as I was sharing with you, for the convenience of PWDs and senior citizens, Election Commission of India has extended many facilities. We now bring you a short video on that. एक और बड़ा काम जो आपको करना है, एक और बड़ा लक्ष्य जो आपको जीतना है, वो है भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करना। और देश हित का यह कार्य सार्थक होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपकी पूरी भागीदारी से। आपकी इस भागीदारी को संभव और सक्षम बना रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ECI का ध्येय हर चुनाव को इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और पार्टिसिपेटिव बनाना है। Persons with disabilities are integral part of the entire electoral process. For a meaningful election, the entire process has to be inclusive and accessible. The Commission's endeavour is to make the entire electoral process such that our PwD brothers and sisters participate in the festival of democracy from the pedestal of pride, equality and respect. इसके लिए ECI ने अनेक पहल शुरू की हैं, जो विशेष रूप से दिव्यांगजन व्यक्तियों को लाभान्वित करती हैं। चुनाव आयोग का ये प्रयत्न है कि सभी दिव्यांग वोटर्स जो हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हों ताकि वो वोट कर सकें और कोई भी वोटर छूटने ना पाए। इसलिए हमने दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके लिए ECI ने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है। सभी दिव्यांगजन अपने आप को
PwD ऐप पर मार्क कर सकते हैं। इस ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा दिव्यांगजन व्यक्तियों को मतदान केंद्रों पर प्रायोरिटी दी जाती है और वे कतार में प्रतीक्षा किए बिना प्रवेश कर सकते हैं। It is time that all barriers be removed so that people with disabilities can come forward and vote. विजुअली इम्पेयर्ड वोटर्स के लाभ के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलेट यूनिट पर ब्रेल साइनेज मौजूद रहती है। एक साथी को नेत्रहीन या वृद्ध मतदाता के साथ जाने की भी अनुमति है। मूक बधिर मतदाताओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इन सभी सुविधाओं का फायदा देश भर के दिव्यांगजन वोटर्स उठा रहे हैं। When I was 18 and I was going to vote for the first time, I was concerned that how I am going to do it. But when I went to the polling station, I was amazed to see the braille numbering on EVM machine. And in addition to that, we also have now braille epic voter slip in braille, and there is a volunteer at the polling station to assist person with disability to cast his or her vote. Also there is a pick and drop facility. So with all these measures, the elections are becoming more and more accessible. हमारे दिव्यांगजन मतदाताओं के बुलंद हौसलों से कदम मिलाता हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुगमता के साथ मतदान करने की उपलब्धता हो, उसके लिए जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से बहुत से फीचर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, म्यूजिक बैंड फ्रॉम मेघालय लाइट आफ्टर डार्क विल परफॉर्म, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन स्टेज CEO मेघालय श्री फेडरिक रॉय सर, who will now present a memento to Honorable Commission. And today they are going to release a video in which these artists have performed. Sorry. Okay. So this is basically My Vote, My Might by Light After Dark. Presenting, Mr. Frederick Roy is presenting, along with the memento. This pendant basically holds the video. My Vote, My कृपया आप लोग अपना स्थान। जी सर, प्लीज। So, ladies and gentlemen, Light After Dark, state's first visually impaired band. My life's worth fighting for. I've understood I value more. I am glad because I'm free to choose the way I see. Sinsharkan plung banshim benta bante kiso ba bhakin say jing ni na rim pe ban per khan pha nin jit ya ka jing em ba pura. I'm glad because I'm choose the way I see. I'm
because that's my might. And roll my check. Hello, check. Check, check, Hello, check, check. check. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and cakes in my face that I come through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You've brought me fame and fortune, everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider a challenge before the whole human race, and I gotta lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. We are the champions, my friends.
for. I've understood I value more. The world has finally come along. I'm here to vote and sing my song. I will make my move against the raging wind. I will make my choice with my own confidence. I am glad because I'm free to choose the way I see. I am glad because I know the place I want to go. Makertengkan yorum, bajing sinsharkan plum, banshim benta bantay, isoba bhakin say, jing mi narim pay ban perkhan bha. Kajing Embapura. I am glad because I'm free to choose the way I see. I am glad because I know the place I want to go. Enroll my name because that's my right. I want to vote because that's my might. Enroll my name because that's my right. I want to vote because that's my voice and my mind. I am glad because I'm free to choose the way I see. I am glad because I want to go. I am glad because I'm free to choose the way I see. I am glad because I'm free to choose the way I see. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में है बार बार करे दरिया को आर पार आशाएं। तूफानों को छिड़ के मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ओ हो, ओ हो, ओ हो, उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके देखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। थैंक यू। Can I have the audio, please? Thank you so much. So huge round of applause for our specially abled artists from Meghalaya and this band, which is Light After Dark band, which was performing. And in the video also, they have actually performed the same way to aware citizens to vote, to cast their franchisee. Thank you so much. Thank you. And now, ladies and gentlemen, we have our next performance, which is by specially abled artists from Delhi. And they will give special performance, in fact, because these artists have been promoted by BKT Media, New Delhi, and they have performed across the globe. They have the special ability of performing on the tunes without hearing it. Special ability of performing on the beats while sitting on the wheelchair, and also of performing with Down syndrome. Put your hands together for our artists, for our performers, which are specially able from Delhi.
थैंक यू सो मच एवरीवन, और मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले उस शक्ति को नमस्कार करना चाहूँगा जिसने इतना खूबसूरत सा इवेंट ऑर्गेनाइज करा और हमें जितने भी दिव्यांग हैं उनको ये मौका दिया कि दिव्यांगता सिर्फ शारीरिक रूप से होती है, मानसिक रूप से नहीं। वी आर हेयर कि हम ये दिखा सकें कि व्हील चेयर शुड नॉट बी द सिंबल ऑफ डिसेबिलिटी, इट शुड बी द सिंबल ऑफ एबिलिटी, दैट्स व्हाई वी आर हियर। आज शायद ये परफॉर्मेंस आपको देखने में अच्छा लगा होगा, एक इंस्पिरेशन मिली होगी, बट ये पिछले 1.5 डेकेड की एक मेहनत है जो छोटी सी आपके सामने आज हम लेकर आए हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस। थैंक यू। कैन आई द ऑडियंस लाइक प्लीज। बहुत सारी तालियां आप लोगों ने बजाई, हमें बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे व्हील चेयर पर बैठे थे, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ब्यूटीफुल डे। एक छोटी सी कमी इसमें रह गई है क्योंकि कुछ बच्चे हमारे साथ में ऐसे हैं जो बिना सुने म्यूजिक को परफॉर्म कर रहे थे, तो हाउ यू कैन अप्रिशिएट दैम, करेक्ट दीदी? जस्ट राइज योर बोथ द हैंड्स एवरीवन, दिस इज हाउ वी अपलॉज अ हियरिंग एंड इम्पेयर्ड पर्संस। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज जब कभी भी आप किसी भी हियरिंग इम्पेयर्ड डिसेबिलिटी को देखिए, इस तरह से आप उनकी सराहना कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं शायद होता, ये हौसले हैं शायद जिनसे उड़ान होती है। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, वो परफॉर्मेंस एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो आज की थीम के ऊपर बेस्ड है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रण कीजिए VR1 के कलाकारों का। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू BKT कलाकार, थैंक यू सो मच। थोड़ा लाइट करना पड़ेगा, डिस्प्ले लाइट करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, ब्राइटनेस कम करो, एक तो लाइन पे जाना है और फिर हाँ और करिए। ओके ओके ओके। इनका साउंड का भी देखते रखना सर, साउंड थोड़ा ठीक हो, इनका थोड़ा तेज़ ही हो। और जब नॉर्मल जब इंट्रैक्शन होगा तब साइन लैंग्वेज को दिक्कत आ रही है तो आपको इको कम करना है, इको जब इंट्रैक्ट मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ओ मेरी ज़मीं महबूब
फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। चाहो तो हमको आसमाना, यार बाज हम चाल साज हम इश्क बाज मिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूने के तार से इंडिया वाले, छीनने हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम
ladies and gentlemen, we really salute their spirit, their zeal, their confidence. Hats off to all of you. Congratulations. बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके जोश और जज्बे के लिए, आपके उत्साह के लिए बहुत धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियां फिर से हमारे सभी कलाकारों के लिए. जैसा कि आपने जाना, इनमें से बहुत से सुन नहीं सकते हैं, बहुत से बोल नहीं सकते हैं और व्हील चेयर पर भी परफॉर्म किया. वाकई अपने आप में बाकमाल. बहुत बहुत शुक्रिया और भविष्य के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. So, ladies and gentlemen, may I now request our distinguished dignitaries and guests, but before that we have to arrange the stage again. So, meanwhile, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, इस गीत में अभी आपने सुना, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. हम, जैसा कि मैं पहले साझा कर रही थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं, अमृत काल में आ चुके हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे, प्रत्येक भारतवासी से ये निवेदन कर चुके हैं कि 5 प्रण के साथ हमें आगे बढ़ना है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. जब बात होती है सबसे बड़े लोकतंत्र की, तो कहना ना होगा कि भारत पूरे विश्व के लिए उदाहरण भी है और आदर्श भी है. विविधता में एकता की हमारी जो पहचान है, उससे पूरा विश्व प्रेरणा लेता है, अचंभित होता है, हैरान होता है कि इतनी सदियों से भारत में हम देख रहे हैं किस तरह से सब लोग साथ मिलकर रहते हैं. और हमारा भारत का निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करता है किस प्रकार से, जी, कि प्रत्येक नागरिक जो है वो मतदान करे, अपने अधिकार का सदुपयोग करे. और इसके लिए हमारा भारत का निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करता है कि सुदूर क्षेत्रों में भी जितने लोग हैं उन्हें आसानी रहे, सुगमता रहे मतदान के दौरान. And ladies and gentlemen, may I now request our distinguished dignitaries to kindly come onto the dais. मैं आप सभी से निवेदन करूँगी, कृपया आप सब मंच पर आने की कृपा करें, सर. And now, in this PwD Icons Conference, our Honorable Commission will interact with national and state PwD icons. Some of them are present here in this auditorium, and as I was sharing with you earlier also that some of the PwD icons are joining us from different states and UTs, and they will interact with the Honorable Commission. और जैसा कि आप सबने देखा कि जो एक्सटेंडेड फीचर्स की हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से, उसमें स्पेशल वॉलंटियर्स की बात की जाए, प्रायोरिटी एक्सेस की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, साइन लैंग्वेज, ईवीएम विद ब्रेल, इसके अलावा PwD ऐप, हेल्प डेस्क, रैम्प फॉर व्हील चेयर और एक्सेसिबल टॉयलेट्स, साइनेज, ऐसी बहुत सारे फीचर्स और सुविधाएं हैं जो जोड़ी गई हैं. और अब हम ऑनरेबल कमीशन की अनुमति लेते हुए इंटरेक्शन जो है वो शुरू करेंगे. और सबसे पहले वी आर गोइंग टू केरला, वेयर वी आर जॉइंड बाय PwD आइकन मिस टिफनी बरार. So can we have Miss Tiffany Brar from Kerala? She is a PwD icon. Okay, sure.
नेक्स्ट हम करते हैं छत्तीसगढ़ से श्री चित्रा सेन साहू जी यहाँ पर उपस्थित हैं इस ऑडिटोरियम में जी। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आप कृपया अपनी बात रखें। Miss Tiffany Ryan here from Kerala. Hello everyone. So Chitra Sen Sahu ji, can someone give the mic? Please आप start कीजिए। अच्छा केरला, Yeah, she's online. Online, Kerala is. Yeah, Tiffany, please. A very good afternoon to everyone, all respected dignitaries. I'm Tiffany Brar from Kerala. I have been the icon since 2008. All the voting facilities here in Kerala have been very smooth and very accessible. Last time in the Election Commission of Kerala had printed 4,000 ballots, braille voting ballots and electric EVMs. We also had volunteers to help us. Also, there was a facility of going to the houses and taking vote, especially during the pandemic time. So I'm very happy with the measures that my state has taken towards, accepting the vote for persons with disabilities. I have a suggestion. The app which is related to the persons with disabilities, the voting, we should have in all states that some technical awareness on the use of this app, because a lot of persons with disabilities are not aware how to access this app. We hope the interface will be accessible and we can get some learning and some classes or some tutorials on how to use this app, where to download it and those kind of things, that people with the disabilities can avail the voting facilities. Apart from this, I'm very happy with our CEO and all the who have helped, all the officers who have helped to make elections an easy and fair process in Kerala. I was introduced by Sadashivan, a very renowned activist, first in the Election Commission. I was introduced by her, so that's how I became interested in inclusive elections. Thank you. Thank you, Tiffany. Next we have Chitra Sen ji from Chhattisgarh. He's our PwD icon from Chhattisgarh. And he's present. यहाँ पे वो खुद उपस्थित है, चित्र सिंह जी. Yes. हेलो, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट 5 साल में मैंने देखा है खुद, 2014 जो है मेरे लिए एक ऐसा साल रहा जब मैं व्हील चेयर में पहली बार इलेक्शन देने गया था, वोट डालने गया था। तब की व्यवस्था और 2019 में भी मैंने वोट किया है, तब की व्यवस्था में काफ़ी चेंजेस आया है। इसके पहले हम लोग मेरा चयन अभी जस्ट स्टेट आइकॉन के रूप में हुआ है निर्वाचन आयोग से। इसके पहले मैं जिला रायपुर से जिला आइकॉन के रूप में काम कर रहा हूं। तो लास्ट 3 साल में जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने काफ़ी एक्सेसिबल इलेक्शन के ऊपर काम किया है, जिसमें अलग अलग NGOs और अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर समन्वय स्थापित करके काम किया है। और स्पेशली हम देखते हैं कि चुनाव स्थल पर वो सारी व्यवस्थाएं हो रही है, जिसमें हमने ऑडिट का भी काम किया था कि जो ऑडिट का प्रारूप जो यहाँ से निर्वाचन आयोग से बना था, और कुछ NGOs ने भी अपने ऑडिट में भी उन्होंने काम किया था, और वो रिपोर्ट्स हमने उस सारे NGOs को और वो इलेक्शन कमीशन में भी जमा हुआ है। तो इस तरह से हमने काम किया। हमने पिछले बार व्हीलचेयर बास्केटबॉल और व्हीलचेयर क्रिकेट को भी यूज़ किया है कि कैसे हम लोगों को प्रमोट करें, कि कैसे हम PWDs को अट्रैक्ट करें कि उनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में अभी भानु प्रतापपुर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोगों को आकर्षित करें मतदान करने के लिए, उनको मोटिवेट करें। साथ में 2023-24 में विधानसभा लोकसभा इलेक्शन, फिर पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें भी हम काम करने वाले हैं। कुछ सजेशंस थे। मुझे लगता है कि पर्सनली कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी पिछले 5-6 साल में बहुत अच्छा काम किया है और सारे संस्थाओं के साथ सामंजस्य करके काम कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम किया है। मुझे लगता है कि डेटा के ऊपर काफ़ी कुछ काम करना बाकी रह गया है, कि बहुत सारे PWDs जो है आइडेंटिफाई ही नहीं हुए हैं, और अभी
डिसेबिलिटी के टाइप जो है 7 से 21 हो गया है, तो ये संख्या काफ़ी बढ़ सकता है। तो इसमें सेंसस डेटा काफ़ी हेल्प करेगा, PWD डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके डेटा काफ़ी हेल्प करेगा, स्कूल कॉलेजेस जो माध्यम है वो एक काफ़ी सशक्त माध्यम हो सकते हैं जो हेल्प कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी या एक IT के माध्यम से इसको काफ़ी अच्छे रूप में इसको आइडेंटिफाई करके इसको यूज़ किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी का टाइप जो है वो बहुत वृहद है। एक टाइप के डिसेबिलिटी में भी अलग अलग लेवल की डिसेबिलिटी होती है, तो उनको 1 साल पहले या 6 महीना पहले उनको चिन्हांकन करके आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे PWDs हैं जिनको मतदान स्थल पर वो स्वयं आ सकते हैं या किनको किस टाइप की फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इससे काफ़ी आसान हो जाएगा और आइडेंटिफिकेशन मस्ट है कि हम पहले से आइडेंटिफाई करें और हम सभी को वोटिंग परसेंटेज बनाने के लिए हेल्प करें। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया जब पिछले 3 साल में मैं काम कर रहा हूँ, तो जो मुझे छत्तीसगढ़ राज्य में दिखाई दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचन का जो मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत हायर स्तर पे है, और जो शहरी क्षेत्र में है वो उसका प्रतिशत काफ़ी लो साइड था। इसके पीछे रीज़न है कि बहुत सारे लोग अपने जिलों में, अपने शहर में नहीं रहते और ट्रैवल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति निर्मित हो रही, शायद अन्य शहरों में भी होगा ये, कि जो लोग जो अपने स्थान छोड़ के दूसरे स्थान चले जाते हैं, उन्हें जो है उस स्थान से उनको वोटिंग करने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज होती है। तो इस क्षेत्र में भी अगर ECI जो है वो काम करे तो और बहुत बढ़िया होगा। बाकी बहुत अच्छा काम कर रहा है ECI। मैं काफ़ी छत्तीसगढ़ और निर्वाचन आयोग ऑफ भारत सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ, और थैंक यू सो मच। थैंक यू चित्रसेन। अब हम चलते हैं गोवा की तरफ। गोवा से ज्वाइन कर रहे हैं श्री ताहा हजीक जी, जो हमारे PWD आइकन है। I'm audible? Yes. Good evening, everybody. The Honorable Commission and all the other dignitaries present offline and online for this wonderful conference. And as it is rightly said, कि this is first of its initiative, जहाँ पे सारे आपके national and state level icons are coming together, including performances and सारा कुछ, to show the diversity and the exact vision of the Election Commission of India. And जैसे rightly compared ने भी बताया कि अपना जो diversity in the unity in diversity जो है, that बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। Initially introducing myself, I am Taha Hazik and postgraduate into classical music and also an expert into accessibility and access technology used for persons with disabilities across the world. Currently, I am into the state civil services in Goa, and I am being posted as the secretary for the Commission for Persons with Disabilities, Government of Goa. अगर मैं आइकॉन के बारे में बात करूं, I have been appointed as the state icon from last 4 years, and the Chief Electoral Office Goa is working tirelessly to include persons with disabilities by giving them complete dignity into the electoral role. और उस रिगार्डिंग काफी सालों से यहाँ पे बहुत सारी चीजें चल रही है, और मुझे ये खुशी है कि अभी जो लास्ट हमारे असेंबली इलेक्शंस थे उसमें हमारे पास 8 बूथ्स थे which were completely manned by persons with disabilities. हमारे almost 1,500 polling booths थे which have become permanently accessible to persons with disabilities. So that access is now irrespective वहाँ पे election हो नहीं हो, that access is there, that facility is there for persons with disabilities to use permanently. So it is almost more than 85% of booths which is completely accessible permanently, and बाकी जो 15% बाकी है, that is also commission is entirely trying to make it accessible जितना हो सके। बहुत एक wonderful concept last time हमारे CEO ऑफिस से लेकर आए थे, which was दिव्यांग मित्र, जिसमें a peer group format, a peer group concept, जहाँ पे every constituency, every BLO level अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे एक person with disability identify किया गया था, so that person with disability could inspire, could motivate other persons with disabilities to come out and vote. And facilities में अगर मैं बोलूँ तो सारा जो ECI ने spread out किया था, right from having special queues or having first preferences, having braille, dummy braille ballots there, having sensitized staff. मैं अगर बताऊँ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे efforts लिए गए, right from BLO levels to AEROs to EROs to ROs, to make their attitude very sensitized, जो सबसे ज़्यादा important होता है।
एंड वो हमने ये इलेक्शंस में बहुत क्लियरली देखे हैं, जहां पे किसी को भी कहीं पे भी एटीट्यूड में तकलीफ नहीं हुई। तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी। अगर सजेशन मैं देना चाहूं मेरे तरफ से इज, जब मैं पहले देखता था ECI की वेबसाइट पे भी हमारे जो रोल पब्लिश होते थे, दैट वाज इन अ रीडेबल फॉर्मेट फॉर पर्संस, फॉर अस जो हमारे स्क्रीन रीडर्स पढ़ते थे। नाउ दैट इज बीन अपलोडेड इन अ प्योर PDF इमेज फॉर्मेट, जो डिफिकल्ट होता है फॉर अ पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटी टू रीड। सो इट इज अ रिक्वेस्ट कि इफ द समरी रिविजन या जो भी रोल हम लोग अपलोड कर रहे हैं, if it could be uploaded in a readable PDF format so that uska misuse bhi na ho and technology can very easily read. In the end, thanking everybody to give us the opportunity and just hoping that our elections get day by day better and better and better. Thank you. Thank you, Taha ji. Next we have उत्तर प्रदेश से हमारे PwD आइकन आकाश, and I would request अपना थोड़ा सा छोटा सा introduction भी दीजिए so that everybody knows who you are. मेरा नाम आकाश है और मैं शूटर हूँ। मुझे दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य का स्टेट आइकॉन PwD बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की मतदाता सूची में दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 10,92,456 है, जो कि मतदान करने के पूर्व मतदाता सूची में पंजीकृत होना आवश्यक है। अतः दिव्यांग भाई बहनों को मतदाता सहायता केंद्र वोटर फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से सहायता प्राप्त करना, अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने का अनुरोध करूंगा। अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें निर्वाचन चुनाव में व्हीलचेयर, साइन एज, हेल्प डेस्क, रैंप व पोस्टल बैलेट पेपर आदि की दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराते हुए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु उनसे अनुरोध करूंगा। मैं भारत निर्वाचन आयोग का मुझे स्टेट आइकॉन PwD बनाए जाने के कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू आकाश। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कर्नाटका। टेक्निकल टीम जो मॉनिटर्स आगे लगे हैं, काइंडली वही फ्लैश कीजिए जो मेन स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। या थैंक यू। यस, कर्नाटका से है अश्विनी अंगाड़ी जी, प्लीज गो हेड। अश्विनी जी। Good evening everyone, honorable election chief commissioners and all the dignitaries who are attending online and offline. And I am Ashwini Angadi from Karnataka. I am the United Nations Award winner as well as awardee from Queen Elizabeth II Britain. So I run a trust for children and women with disabilities in Karnataka. So I pay sincere gratitude for my Karnataka Election Commission team for choosing me as an icon. I am icon since 2018. So as an icon, the things which I did in my state is like, I created awareness about the voting line helpline app and the PwD app to all my persons with disability friends through social media, WhatsApp and other social media apps. And the other thing which I did is, many of our friends are unreached to all the social media apps and how to access it. So I went to each institution and created awareness and taught how to use those apps along with my team. And I would like to extend a hearty thank to my Karnataka team for being so dignified with our visually impaired and other disabled people who are coming for voting. And during COVID time, it was really great difficult for us to come and vote. But Karnataka states have provided special transportation and installed many ramps with all the braille scripted machines in the voting. So it made us so easy
to me and my other visually impaired and different ability friends in Karnataka to vote. So, as an icon, I would like to do in future is the upcoming PwD app should be given to awareness to all the PwD friends and other people. And the suggestion which I wanted to give it is like the PwD app is still little unaccessible for us. So make it so accessible, and the voting helpline, the app also. Sometimes in the old phones, yeah, it was little accessible, but now it was quite unaccessible. So all the voting related thing, it should be in readable format for all visually impaired friends. These are the suggestions which I would like to give. And thank you very much for giving me an opportunity to speak to you all. Thank you. Thank you, Ashwini. Next we have Sharad Kumar from Delhi. Good evening, everybody. I am Sharad Kumar, Paralympic bronze medalist and also Assistant Director of Sports, Delhi. I have recently joined as the PwD state icon. I really thank you for making that. But the only suggestion I would like to give in behalf of all the sports person is, like, most of us are always traveling internationally for a lot of competitions. And of course, for voting, maybe one also makes a big deal. So I would only suggest that if we could come up with something where when we are traveling and then be still in a position to vote would be very, very essential. And I thank you for this conference, the first. देखिए, अभी जो हमने प्रोग्राम देखे, सुने समझे, उसमें कितनी मेहनत थी। एक पत्थर ठोकर खाकर कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। जो एक महत्वपूर्ण जो जिजीविसा इलेक्शन कमीशन ने दिखाई है, और साथ ही साथ उसका पूर्ण सहयोग किया है हमारे पीडब्ल्यूडी आइकन्स ने, तो इस मंजिल को हमें और आगे बेहतर बनाना होगा। और मैं लगभग पिछले 4 वर्षों से इसके साथ जुड़ा हुआ हूं। दिल्ली जैसे प्रदेश में ये बहुत ही सुगमता के साथ इनकी सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, चाहे वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हो, चाहे फिर एक्सेसिबिलिटी सुगमता की, ये सब बहुत ही अनोखे रूप में और बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पर मैं शरद जी की बात का समर्थन करूंगा कि जो एथलीट्स हैं या बहुत सारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स कई बार बहुत अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों में भी काम करते हैं, तो उस टाइम पर वो कई बार नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई जानी चाहिए, चाहे वो पहले वोट कर सकें या फिर ऑनलाइन वोटिंग उनके लिए वहां से संभव हो सके। थैंक यू। थैंक यू अंकुर। नाउ वी मूव टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मिजोरम से जॉइनिंग अस श्रीपूलाल बुआतसाया। Good evening, all of you. Honorable Chief Election Commissioner of India and all other distinguished and respectable dignitarians, all state and UT icons for PwD. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you for giving me an opportunity to deliver a speech for this important meeting. My name is Mr. Lalbuasaya. I am a visually disabled person. I am a state icon for SVEP PwD in Mizoram. I was also district icon for SVEP PwD in 2018, State Legislative Assembly election, as well as Parliament election in 2019. My professional is assistant professor. I'm working at one government college in Aizawl. I am the advisor of Mizoram Blind Society. As far as government is concerned, I am the member of Accessible Election Committee
for persons with disabilities in Mizoram. I am the member of Advisory Committee for Disability Commissioner in Mizoram. At the same time, I am also a member of Mizoram State Committee on Disability Research. There are several remarkable progress and achievement emerged in accessible election for PwD since 2018. So today I'm going to highlight a few points. Since 2018 elections, Mizoram state election worked properly for accessible elections. So volunteers have been mobilized on polling day. At the same time, special vehicle also arranged for PwD voters by Directorate of State Election as well as CEO office in Mizoram. So that has given lots of opportunity to cast vote for PwD voters. And Braille epics and Braille voters guides have also been distributed among the blind voters. This time also there are several preparations has been made by Directorate of State Election Office, Government of Mizoram, as well as District Election Office, CSO, BLO, RO, training on sensitization for PwD voters have been organized frequently nowadays at state level as well as district level. And this time it was through the initiative of Directorate of State Elections in Mizoram. New Braille Epic is also going to distribute very soon for the blind voters. And at the same time, another important training program, a sensitization training program for BLO, CSO, RO at state and district level are also planned to organize frequently for the preparation of upcoming Mizoram State Legislative Assembly election in 2023. And the last but not the least, PwD voters enrollment camp also planned to organize during this month under the guidance and supervision of Directorate of Mizoram State Election. So there are several progress emerged in Mizoram on accessible election because of the hard working of the Directorate of State Election as well as CEO office and all district election officers. So PwD voters are really aware about the value of their votes right now. So we are very grateful to Election Commission of India as well as our state election official for their hard working. As an icon, I would like to suggest that ECI should always give proper awareness and sensitization training program all over India more and more for the upcoming future. At the same time, today I would like to mention that our state joint chief electoral officer and assistant CEO is also accompany me, and we join this function. I want to thank to all of, I would like to thank to them for accompanying me. And lastly, I would like to express my heartfelt thanks to Election Commission of India for introducing accessible elections for persons with disabilities. Thank you. Thank you, Poo. Now we move on to Chandigarh. चंडीगढ़ से हमसे जुड़े हुए हैं जगन्नाथ सिंह जयारा. Very good afternoon to one and all. Myself is Jagannath Singh Jayara. I am working as principal at Institute for the Blind, Sector 26, Chandigarh.
Basically, I was appointed as state icon during parliamentary election in 2019. And first of all, I extend my hearty congratulations to Chief Election Commissioner India, his entire team, and worthy CEO UT Chandigarh and his entire team for taking cognizance to make election accessible, सुगम्य बने, पार्टिसिपेटरी, जनभागिता हो, इंक्लूसिव, वो जो है एक प्रकार से सबके लिए जो है उसमें सभी का समीकरण होना चाहिए। ये बहुत बधाई की बात है। और ईसीआई ने तो मतदाता जंक्शन का भी जो है एक बीड़ा लिया है और वो वास्तव में दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस। और हम यही कहते हैं कि माना के अंधेरा घना है मगर मत देना कहां मना है, माना के अंधेरा घना है मगर वोट देना कहां मना है। जिंदगी लगाओ किसी के लिए, एक प्यार का हाथ तो बढ़ाओ किसी के लिए, घर में आके उजाला हो जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी, टू एंजॉय द फेस्टिविटी ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव टू sensitize, we have to motivate our PwD voters, those are eligible, क्योंकि nothing for us without us। जब तक हम इस प्रोसेस में इस इतना बड़ा जो उत्सव है इसमें आगे नहीं आएंगे, हमारी भागीदारी नहीं होगी, तो हमारी आवाज कहां सुनी जाएगी। आई एम थैंकफुल टू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, CEO एंड हिज एंटायर टीम। लोकसभा के इलेक्शन के दौरान चंडीगढ़ में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का सृजन किया गया और पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी गई, नॉट ओनली टू विजुअली इंपेयर्ड, लेकिन जिस भी दिव्यांग जन ने अपनी इच्छा जाहिर की है थ्रू PwD ऐप या बता करके उसको वो फैसिलिटी मिली है। और जैसे कि नेशनल आइकन मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वोटर स्लिप्स, इपिक एंड वी कैन से दैट वोटर लिस्ट एंड अटेंडेंट, और वहां पे जाकर के उनको गाइड करना, वॉलेंटियर मिलना, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि जुड़े जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बनी, प्यार के रंग बनो जिंदा तस्वीर बनी। तस्वीर तभी बनती है जब सब लोग आएंगे, क्योंकि अनेकता में एकता का मिश्रण होता है। और हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या चंडीगढ़ है या और जगह, जैसे सभी आइकन ने बात की है that to provide transport facility or barrier free environment and to give them orientation regarding how to cast the vote, how to exercise their vote, ये सारी सुविधाएं चंडीगढ़ में भी की गई हैं। हाँ, सजेशन ये है कि जो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए हमारे जो CEO साहब कोशिश करेंगे ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। जो लोग ID वाले हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं या और प्रकार की जो दिव्यांगता है, उन लोगों को कैसे इस उत्सव में शामिल किया जाए उसके लिए भी काम होगा। और मोर एंड मोर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मैडम कर्नाटक वाला बोल रही थी, ऐप इज देयर, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसकी एक अवेयरनेस भी होना बहुत जरूरी है। तो कहने का अभिप्राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बधाई का पात्र है और सभी लोग जितने इस पुण्य काम से जुड़े हैं, हम तो ये कहते हैं कि मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में, गीतों में ढल जाएगी वेदना जो आह में। Every person with disability should come forward that this is my privilege, this is my birthright, and administration ready to cooperate us. There should be no cooperation, collaboration, synergy, and understanding. So I think everything will become easy day by day. And Commission is doing a lot of sensitization, lot of training, lot of distribution material and social media. प्रिंट मीडिया एंड SMS, वॉइस मीडिया, ये सारी चीज का जब प्रयोग करेंगे तो ये लोकतंत्र विल बिकम मोर स्ट्रेंथन, मोर डेमोक्रेटिक। क्योंकि समय कम है, मुझे पता है सभी लोग, समय धीरे धीरे जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इस प्रकार का जो ये कमीशन ने जो ये प्रयास किया वो बधाई के पात्र हैं। इन फ्यूचर सच टाइप ऑफ मीटिंग शुड बी कंडक्टेड सो दैट वी कैन एक्सचेंज, वी कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर टू सॉर्ट आउट द डिफिकल्टीज। ये कहूंगा कि धीरे धीरे बांधेंगे बस्ते, जाएंगे हंसते हंसते, आम से मिलेंगे सस्ते। आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद जगन्नाथ जी। नाउ वी हैव शंकर रमन, द PwD आइकन फ्रॉम तमिलनाडु।
Good afternoon, everybody. I am Shankar Raman from Tamil Nadu, and I am the state icon here. I am the secretary of an organization called Amar Seva Sangam, which is doing work for persons with disabilities in their empowerment. And I am a chartered accountant by my qualification. I have been seeing the election process right from the time when I got into the age of 18, way back in 1982 onwards. In those times, it has been a big challenge because people could not understand the needs and requirements of a person with a disability. But today, we have gone a very long way. There were a lot of advocacy that we had to interact with the Election Commission, and I am happy that from 2018 I am made a state icon, and the present growth and improvement in the electoral process, particularly for persons with disabilities, has been phenomenal. And we have been setting an example, I would say very proudly, that India has set a very good example of a fair and equitable electoral process which is inclusive in its approach and transparent in the manner in which it conducts elections. So I congratulate Sri Rajiv Kumarji and also our State Commissioner Sri Sabuji for the excellent work that they have been doing in the past. In the last election, we had more than 4.3 lakh Tamil Nadu voters who are persons with disabilities, and from the sample survey that we have done with the Disability Department, we could see that 70% of them have come forward for voting. And this is an excellent result, and I congratulate Sabuji for the awareness that they have created in the state. As an icon, I could contribute a lot by way of providing awareness through media while I give my own experience on why the voting is important and how big difference we can make as persons with disabilities to this great nation. We in India, as persons with disabilities, the census 2011 population, if extrapolated to the current level, would be about 2.3 crores of persons with disabilities. The recent amendment to the Right for Persons with Disabilities Act has made the disability expanded. Now there are 21 categories of disabilities that are recognized under the RPD Act. This means that there are a lot more people that could be added. So we can say that there will be around 4 to 5 crore persons with disabilities out of our population of 140 crores. This is indeed a big number, a number which is more than the whole population of any country in many of the countries in this planet. So we are a very recognizable number, and we need to get more participation. The inclusion should be there in all respects. From being people who are electing, we should become people who are elected also. So we need to be given an opportunity to become member of parliaments or member of legislative assemblies. So there needs to be a system by which there is a reservation for persons with disabilities in the electoral process. There can also be a nomination of a person with disability in the Rajya Sabha MP post, which should be made a mandatory one. If these changes are made, we can have our voice heard because it is a sizable number of population. Not only elections, but there are various other social, economic and political aspects where persons with disabilities needs to be provided opportunities. And the parliament and the legislative assemblies and the local panchayat
they are the best forums for us to voice our requirements and give a representation of our issues. We need only empathy, and this can best be achieved through the participation in the legislative and decision-making process at the highest level. We do not require sympathy as such. We need understanding and enabling environment. Today, if a lot of our people are here at ICONS, it is because of the opportunities that we have been given. And I am sure that we are all contributing our might. So in our thoughts, my personal belief is that disability is not a constraint. Despite my condition being a person with muscular dystrophy, I have been able to contribute because the environment has given me these opportunities. The commission is giving me an opportunity. There are many people who are around are providing the opportunity because they understand my capacity. Similarly, if all persons with disabilities in the country are given an opportunity, they can also perform. And for this purpose, the electoral reform and the process of election, including making the person with disabilities inclusive, is very, very important. And I congratulate and thank the current team for the opportunities that they are providing and for continuous improvement in making the election accessible and moving forward towards inclusiveness. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Now we have our state icon, Jija Ghosh from West Bengal. And post that, we'll move on to Neeruji. But Jija goes first. First, I will begin by thanking the election commissioner to have organized such a conference of PwD icon. I am Jija Ghosh. I represent West Bengal, and I have been an election icon since 2018. In West Bengal, we have a very mixed report. In Calcutta, the capital, many booths were not accessible at all. There was no ramp, nothing. But in the rural areas, the situation was better when they were ramp. Another thing was the braille ballot. Even the officers on duty were not aware. What are the braille ballots? Where are the braille ballots? The third point is there should be proper training of the polling officers, because I myself went to vote and it was on the ground floor.
grandpa, when there were few steps, there was some steps, and I asked the CRPF people who were on duty. I asked them, is there any ramp? The guy didn't know what was the ramp. He had no ideas. So when we had training people in the polling booth, we keep in mind everybody. So that was my experience. And I will say there needs to be more training of the electoral officers and anybody involved with the voting process. I, on my part, did whatever I could spreading awareness, but I feel more awareness required, and also apart from voting, PwD need to be represented in the government, both at state, central, and local level. Thank you. Thank you so much, Jija. I think we should all give a round of applause to all the state PwD icons joining us virtually and physically. Yes, thank you so much. Now I request Tapasya to take over. Thank you. Thank you, Ms. Dipali ma'am, for conducting this interactive session, and we are thankful to all our participants. Ladies and gentlemen, it's actually our privilege and honor indeed to have Padma Shri Dr. Neeru Kumarji with us. She is National PwD Icon of Election Commission of India, a pioneer in the field of diversity and inclusion. Dr. Neeru Kumarji is the founder of D&I consulting firm, Ask Insights. She was conferred with Padma Shri by Government of India in 2021. Dr. Neeru Kumarji offers her expertise in diversity strategy, policies, talent management, assessments and analytics, covering various other related areas. May I request Dr. Neeru Kumarji to kindly share her views and thoughts with us. Ma'am, please. We can provide you a mic here only. Thank you. Good evening, everybody. It's an absolute honor to be here. I thank the Election Commission of India and all the delegates and organizers for organizing such a fantastic event. I must say that listening to all the state icons and watching the performance has left me absolutely hypnotized. And what is hypnosis? Hypnosis is when the message is so strong that it goes directly into your unconscious mind and stays there forever. I think all of us are experiencing that today. And when we talk about unconscious bias, those are messages also which have gone in our brain perhaps while we were growing up. Today I want to talk about unconscious inclusion instead of unconscious bias. So when we are small, a lot of the programming of our brain takes place in childhood. When we hear messages from people who are stronger and bigger than us,
be it our parents, be it our teachers, be it our leaders, when we hear those messages, positive or negative, they get entrenched in our brains forever. I'm a woman with a disability. I got polio when I was 3 years of age. I grew up listening to words which were very disheartening. We all who are having any kind of disability have been through that. Whether it is words like langda, andha, behra, we have been through that. People laughing at us, we have been through that. And those were the messages which made us feel and everybody around us feel that we are less. It became a belief in some of us. It became a belief in many. Now, to change that into unconscious inclusion, we need equally powerful people to change that message. Election Commission of India is that powerful body which is doing that. And this concept, I'll talk about a concept called allyship. This concept is one of allyship. And I must say that Honorable Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar ji, is such a big champion and sponsor of this. And I have to share this with you, that when he took office, I got a surprise phone call from him. And he said, "You are the first person I'm calling after taking office." I was humbled beyond words. It shows his commitment. I've had repeated conversations with him when he says, booths accessible हो रहे हैं और हो जाएंगे, मुझे इससे कुछ और करना है. What is it that we can do which is bigger than this? So he is an ally. The Election Commission is an ally. Setting an example for all other government bodies, all other educational institutions, in fact, everybody in the country, because till now, ours is not a country which has either been accessible or sensitized. The other term that I want to talk about is equity. When we hear of the term equity, we think of finance. But let me tell you what equity is for those who don't know. There is a difference between equality and equity. Equality means providing a level playground to all. Is that enough? So there is a beautiful image of 3 people at a fence trying to watch a match beyond. There is a box, there's a tall person who doesn't need a box. Then there is another person who needs 2 boxes. But there's a person on wheelchair who needs a ramp. Equity means taking care of specific needs, not providing equal opportunities to all. Again, Election Commission of India is a role model example that these needs have to be looked at sensitively and delicately. I'm a consultant to large corporates, and I can tell you people fight with me on the term equity. They say, why special advantages to women? Why special advantages to people with disabilities? It should be about equality and not equity. When leaders of that stature start talking, that looking after the specific needs is extremely important, then the mindsets change. There have been in the corporates that I have worked with, including an organization, PepsiCo, which all of you know, they had a plant specifically run only by women to provide that equity. Yum Foods, the KFC brand that most of you know about, they have restaurants which are run by speech impaired and hearing impaired people exclusively. That is equity. My request to the icons here, to inspire more people to make use of that equity. See, in my growing up years, I was very defensive. So if somebody would say, take use of something, a quota or something special, I would say, no, I'm not going to do that. I appeared for medicine without taking use of any quota. I appeared for UPSC without taking use of any quota. Today, I think that's a mistake. Because there are so many hardships that we have gone through, and that needs to be compensated. The backlog of the past needs to be compensated. So I urge the icons, the PwD icons, convince more and more people
convince more and more people with disabilities to make use of all the facilities that the Election Commission is providing and come forward and vote and not be defensive or hesitant. There are so many disabilities which people don't open up. Our census may not be accurate because there are disabilities which are not visible. If you know any such people, urge them to come out. My appeal to the Election Commission of India is this: let's create a wave and a movement. Let Election Commission of India be the role model government organization. One of the principles of allyship is inspire more of your kind. Inspire other government bodies, especially those who are connected with elections. Be it the government schools, which are the polling booths, be it the police department, or be it any other organizations associated in the voting process. Inspire them to be inclusive not only at the time of election, but beyond that. Let this be included into the curriculum of educational bodies, what Election Commission is doing right now. Let's partner with non-profits to see how we can collaborate together to be able to inspire and bring out more and more people with disabilities. I'm going to end with a small story. This is a story of a balloon seller who had many multiple colored gas balloons in his hand. A small boy comes to him and says, "Ye red balloon udta hai?" He said, "Haan." "Green balloon udta hai?" "Haan." "Blue balloon udta hai?" And the balloon seller is getting irritated and saying, "Silly boy, it's not the color of the balloon, it is the air that makes the balloons fly." So, let us all join hands and create that air where balloons of all colors can fly freely and soar high. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Neeru Kumarji, our national PwD icon, for sharing your experiences with us and for your words of wisdom. Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, respected Shri Rajesh Agrawalji, is a 1989 batch IS officer of Maharashtra cadre. Sir has done BTech in Computer Science from IIT Delhi. As Director in Election Commission of India from 2003 to 2007, he contributed in IT efforts of the Commission for cleaner voter list and in the creation of photo rules. And I would like to share with you that I had the privilege of working under Sir for so many years. And Sir, we are actually delighted to have you here in this conference. And may I request you for the address, Sir, please. First, I would like to express thanks to CEC and AC Sir and the entire ECI team for arranging this wonderful event. WHO says that 5 to 10% people across the world have some kind of disabilities. Our census 2011 showed the figure in India at about 2.2%, about 2.68 crores. But if we look at functional challenges, the figure will be much higher. So we are talking about inclusion of these whole set of people. मुझे सौभाग्य मिला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में काम करने का 2003 से 7। तो आईटी के अलावा उस टाइम 2004 में लोकसभा इलेक्शन में पहली बार ऑर्डर निकाले गए कि पोलिंग बूथ फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होंगे। शहरों में कई जगह पोलिंग बूथ फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे भी होते थे, लिफ्ट भी नहीं होती, सीढ़ियाँ होती हैं पतली सी। तो हुआ कि ग्राउंड फ्लोर पे होंगे सारे पोलिंग बूथ और रैंप्स के आदेश दिए गए। और उस टाइम हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट भी किया था गुड़गांव में और बेंगलुरु में कि ईवीएम्स पे ब्रेल के स्टिकर लगाए थे। तो इस तरह के शुरुआत हुई थी और अब मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 5-6 साल में दिस हैज़ बीन टेकन टू टोटली न्यू स्केल। हमारे देश में हर धर्म के, हर क्षेत्र के बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, पर हर हिंदुस्तानी का एक कॉमन फेस्टिवल है जो सेकुलर फेस्टिवल है डेमोक्रेसी का। और वोटिंग डे पे हर कोई रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, डिसेबिलिटी, हर एक की इच्छा होती है कि हम जाके वोट डालें। पर उस दिन से पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं ताकि हम उस दिन तक पहुंच पाएं। तो वो स्टेप्स क्या हैं? पहले तो 18 साल से पहले हम
बच्चों को जागरूक करें कि आपको वोटर बनना है, जैसे ही 18 साल के हो जाओ इमीडिएटली फॉर्म भरो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये जागरूकता हमारे जो जितने PWD आइकॉन्स हैं सबसे गुजारिश होगी कि उसमें भी उस स्टेप से ही अपने को काम करना है कि सभी बच्चों को 18 साल का होते ही इंक्लूड कराना है। और जो फॉर्म्स का प्रोसेस है वो सबके लिए सिंपल हो, चाहे वो ब्लाइंड हो, डेफ हो, हर एक को वो प्रोसेस इजीली कर पाएँ। फिर आज थोड़ा सा बात हुई कि कई बार वोटर लिस्ट में नाम सर्च करने में दिक्कत हो जाती है, वो ब्लाइंड फ्रेंडली नहीं होता, आप PDF को पढ़ नहीं पाते, तो वो कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक मैं थोड़ा सा गैप समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं और अवेयरनेस है उसमें थोड़ा गैप है। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आज जो अपने मैनिफेस्टो ब्रेल में निकालती हैं या इंडियन साइन लैंग्वेज में निकालती हैं, या कितने न्यूज़ चैनल पे, दूरदर्शन पे तो होता है कि साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं साथ में, पर प्राइवेट इतने न्यूज़ चैनल हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स दिखा रहे होते हैं, तो कितनी जगह पे अपन इंडियन साइन लैंग्वेज में वो साथ में दिखाते हैं। या कई जगह पे जो आपका ऑडियो नहीं होता, सिर्फ एक टेक्स्ट ट्रैक चल रहा होता है, तो जो ब्लाइंड हैं वो टेक्स्ट तो पढ़ नहीं पाते, तो ऑडियो ट्रैक उसका होना चाहिए। वही चीज़ें वेबसाइट पे हैं, वही चीज़ें न्यूज़ चैनल पे हैं, और वही चीज़ें अपने जो चाहे प्रिंटेड मटेरियल पॉलिटिकल पार्टीज बांट रही हैं उसमें भी हैं। तो आई थिंक एक वो थोड़ा सा गैप है, तो उस पर जैसे जैसे जागरूकता आएगी, और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के तो अलग अलग दिव्यांग सेल्स भी हैं, तो उनके साथ भी हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। और इसके बाद बात आती है कि वोटिंग डे वाले दिन ऑन वे टू द बूथ, वो क्या इजी प्रोसेस है क्या? दिल्ली में आप देखिए कि पोलिंग बूथ तो हम रैंप बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उसके अंदर तो व्हीलचेयर जा सकती है, पर अगर पोलिंग बूथ आपके घर से 500 मीटर दूर भी हो तो क्या आप व्हीलचेयर लेके वहाँ तक पहुँच सकते हो? आपकी दिल्ली की फुटपाथ या सड़कें या ट्रैफिक उस हिसाब से है क्या? तो अपने को एंड टू एंड अभी भी जो हम बात करते हैं वो चैलेंजेस कुछ हैं। पोलिंग बूथ के अंदर तो अच्छा कर दिया गया है, सो ऑन वे टू द बूथ हाउ टू मेक दैट एक्सेसिबल। फिर आउटसाइड द बूथ, उसमें यहाँ पे बैठी एक हमारी आइकॉन ने कहा कि बूथ में कई बार सिक्योरिटी गार्ड सेंसिटाइज नहीं होते, अपने CISF CRPF वाले, उनको पता नहीं होता रैंप कहाँ पे है, तो ये हुआ। कई बार टॉयलेट अपना एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं होते कई बार। तो आउटसाइड द बूथ क्राउड मैनेजमेंट में इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ऑर्डर निकाला हुआ है, सेंसिटिविटी है कि कोई वृद्ध आ जाता है या दिव्यांग होता है तो उनको प्रायोरिटी से दूसरे लोग भी वोट डालने देते हैं, चाहे अलग से लाइन ना भी लगी हो। देन एक महत्वपूर्ण हो जाता है इनसाइड द बूथ। इनसाइड द बूथ में एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि चाहे वो ब्लाइंड हो, उनको लगता है कि मैं बिना असिस्टेंस के वोट डालूं क्या खुद की? वहां तक चाहे अपना वॉलंटियर भी आ जाएगा, हेल्प कर देगा, पर इनसाइड द पोलिंग बूथ दैट्स ए सेक्रेड एरिया एंड वी हैव टू इंश्योर कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल, तो इसमें EVM में ब्रेल हो वो अच्छा है, और लकीली अपने EVM में ऑडियो भी है, वो पी की आवाज़ भी आती है। अगर कोई ब्लाइंड है तो दे नो कि अब पोलिंग बूथ ने ओके कर दिया है, मैं वोट डाल सकता हूँ, और वोट डालते ही फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पी की आवाज़ आती है, तो वन अंडरस्टैंड्स कि वोट डल गया। ऐसे ही जो डेफ हैं, ऑडियो नहीं सुन सकते मशीन का, मशीन पे लाइट्स हैं, आपको पता चल जाता है कि अब मशीन तैयार है, और आप बटन दबाते हो, नीला बटन दबाते हो, फिर से एक लाइट जलती है। तो ये सब इंक्लूसिवनेस के साधन हैं। इसमें बहुत थोड़ा सा एक डिमांड आ रही है, और वो भी जेन्युइन डिमांड है कि जो बिल्कुल इमोबाइल हैं या रिमोट एरिया में हैं या अपने स्टूडेंट्स हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको कहीं कहीं सर मेरा भी गुजारिश रहेगा कि हम एक्सपेरिमेंट शुरुआत करें छोटे छोटे, कहीं 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए, ऑन रिमोट वोटिंग, ऑन वट एवर काइंड ऑफ सिस्टम, सैंडबॉक्स्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं इस पे, एंड वो भी सर एक अच्छी शुरुआत होगी। और मैं देख रहा हूँ कि NIC की नीता वर्मा जी भी बैठी हुई हैं, और कुछ आइकॉन्स ने भी कहा कि डेटा शेयरिंग हो जाए इलेक्शन कमीशन और हमारी डिपार्टमेंट के बीच में, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ों की उससे निकल सकती हैं। उसमें हमने UDID का डेटाबेस है, हमारे स्कॉलरशिप्स का डेटाबेस है,
फिर असिस्टिव डिवाइसेस हमने किनको दिए हैं, किस क्षेत्र में, किस गांव में कितनी व्हील चेयर्स बटी हैं, तो उससे इलेक्शन कमीशन को भी मदद मिलेगी कि यहाँ पे थोड़ा सा हायर कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाए किसी पर्टिकुलर टाइप के चैलेंजेस का। तो वो डेटा की शेयरिंग की शुरुआत हो गई है और हम भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन का रिवर्स डेटा हम किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकें। तो आज एक यहाँ पे हम सभी को एक बहुत ही दिल, दिमाग और आत्मा को छूने वाली प्रेजेंटेशंस देखने को मिली म्यूज़िक और डांस की। और म्यूज़िक और डांस को तो ह्यूमैनिटी का यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला जाता है कि हर कोई समझता है। और उसमें हमने देखा कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स भी थे प्रेजेंटेशन में, हियरिंग चैलेंज्ड भी थे, लोकोमोटर चैलेंजेस वाले थे, डाउन सिंड्रोम वाले थे, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग थे। तो सभी ने अपनी गजब की प्रतिभा दिखाई। तो उन सब बच्चों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। वो अपने कैरियर में, ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ बटोरते रहें, हम सब उनके साथ रहें, ये एक कामना करता हूँ। और एक बहुत अच्छा फंक्शन आज देखने को मिला, एक फंक्शन कहिए, वर्कशॉप कहिए। और आई एम श्योर कि जो हमारे मीडिया के भी फ्रेंड्स हैं उनके भी दिल दिमाग को ये चीज़ छुई होगी कि इंक्लूसिवनेस इन सोसाइटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और सर हम आगे भी ऐसे इकट्ठा मिलकर काम करते रहें, मुझे पूरी इसकी आई एम श्योर ऑफ इट। और मेरे लिए थोड़ा सा ये घर वापसी वाली बात भी है कि 4 साल इलेक्शन कमीशन में काम किया और आज मैं देख रहा हूँ कि फिर से इकट्ठा साथ में मिलने का, काम करने का मौका मिल रहा है। सो आई थैंक यू फॉर दैट। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। Respected Shri Rajesh Agrawal ji, Secretary Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Our Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey sir is an IS officer of 1984 batch UP cadre. In the span of 4 decades, sir has worked in various ministries and departments in the centre as well as in other states. As Chief Secretary in UP government, he organized elections in 2019. Shri Anup Chandra Pandey sir has keen interest in reading and writing. He holds a doctorate of philosophy in ancient Indian history and also authored a book titled Governance in Ancient India. May I request Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey sir for the address. Sir, please. Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, our national icon Dr. Neeru Kumar ji, our Senior DEC Shri Dharmendra Kumar ji, Secretary Disability Department Shri Rajesh Agrawal ji, CEO Delhi Dr. Ranveer Singh ji, all the CEOs present through video conference, all our state icons present here, officers of Election Commission, all our state icons present here, distinguished ladies and gentlemen. At the outset, I congratulate Shri Ranveer Singh ji and his entire team for, I would say, organizing this unique initiative. Unique in the sense that I do not think that this kind of a conference of state icons has been ever held. This provides all of us with a platform to share our experiences, a platform to raise the issues, a platform to give proposals, a platform
to reinforce each other. आप सभी स्टेट आइकन्स अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में अकेले काम कर रहे हैं, मगर ये जो अकेले हैं इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई अकेला दृढ़ प्रतिज्ञ देता चुनौती इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाती हैं. So this is a forum. This is a forum when we reinforce each other, and this is a occasion where all of us together can pool in our ideas and maybe reinforce each other to achieve our mutual objective. Today, we have seen some excellent performances by our cultural teams, and we have had an excellent interaction with our state icons. तो इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि दिव्यांगजन शक्तिहीन नहीं है, उनमें बाकी लोगों से शक्ति ज़्यादा है, और ये शक्ति जो है इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक है, और यही लोकतंत्र को आगे बढ़ाएगा. The focus of Election Commission of India has been to enhance participation, to strengthen the facilitation, to mold public perceptions about the potential of PWDs and include their voice as equal citizens that set the stage for social and economic integration. Accessible and inclusive elections to all eligible voters have been an underlying non-negotiable premise of the Election Commission of India till date, which the Commission is consciously striving to enhance day by day, election after election, across all the states and union territories. इस देश का अगर हम इतिहास देखें तो हमारा इतिहास एक समावेशी इतिहास है. हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है. जब देश पराधीन भी था और उस समय जो इलेक्शंस हुआ करते थे, बहुत ही लिमिटेड इलेक्शंस हुआ करते थे, बहुत कम लोगों को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार था. उस समय भी 1928 में यहाँ ऑल पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसने ये निर्णय लिया था, जिसमें सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे. उन्होंने ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करेंगे. हर व्यक्ति को, चाहे उसका कोई भी स्टेटस हो, उसे हम वोट देने का अधिकार देंगे. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हुए, तब भी हमारे जो संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने दे डिसाइडेड दैट इंडिया विल हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज irrespective of any discrimination. और फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रखा गया. इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 41, उसमें ये हमारे संविधान के रचयिताओं ने ये रखा कि जो स्टेट है वो दिव्यांगजनों के वेलफेयर के लिए कार्य करेगा. इसी को दृष्टिगत रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक जो हम लोगों का मोटो है वो पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस का है, वो इंक्लूसिव इलेक्शंस का है, वो एक्सेसिबल इलेक्शंस का है. तो इसमें लगातार हम लोग काम करते चले आ रहे हैं, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन का कार्य हो, मैपिंग का कार्य हो, सेंसिटाइजेशन का कार्य हो,
ट्रेनिंग का कार्य हो, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस को सेटअप करने का कार्य हो, फैसिलिटेशन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, इन सभी क्षेत्रों में इलेक्शन कमीशन ने बहुत अधिक कार्य किया है। लेकिन समस्याएं भी हैं। जब अभी जैसे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी ये बात कर रहे थे वहाँ पर कि जब आइडेंटिफिकेशन की बात है तो आइडेंटिफिकेशन में एक झिझक रहती है। ये ज़रूरी नहीं कि दिव्यांगजन जो हैं वो स्वतः अपने आप आएँ, इसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ सभी लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मदद से जाना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क विद द NGOs, वी हैव टू वर्क विद द CSOs, वी हैव टू वर्क विद dovetail our efforts with the Ministry of Disabilities. We have to ensure that all the databases are they converge and we take help from them. तो चाहे आइडेंटिफिकेशन का कार्य हो, मैपिंग का कार्य हो, इसी तरह से जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, यद्यपि उनकी ट्रेनिंग का कार्य हम काफ़ी हद तक करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में और अधिक सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ठीक है, व्हील चेयर उपलब्ध कराएं, हमने ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराया, मगर क्या जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात है, क्या घर से बूथ तक आने में उन्हें सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं? इन सब चीज़ों का एक ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये कमीशन जो है, कमीशन ने जो कार्य अभी तक किए हैं उसमें नेशनल एडवाइजरी कमेटी हमने बनाई है। इस समय इस चुनाव में भी हमने एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर्स रखे हैं। ये तो ठीक है कि चुनाव आयोग जो है वो निर्देश देता है कि ये मेजर्स किए जाने चाहिए, ये कदम लिए जाने चाहिए। क्या उन कदमों का पालन किया जा रहा है? रैंप की व्यवस्था सारे पोलिंग बूथ्स पर है, लेकिन क्या वो जो रैंप है उसकी जो चढ़ाई है, उसका जो ग्रेडियंट है वो उतना है कि सुलभ रूप से कोई भी दिव्यांगजन उस पर चढ़ पाए? तो इसकी व्यवस्था दिखवाने के लिए वहाँ पर तो और जो अरेंजमेंट्स हमने कहे हैं उनका फील्ड में कितना अनुपालन हो रहा है, इसके लिए हम एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर्स को भी रखते हैं। अभी भी जो हिमाचल के चुनाव हो रहे हैं, जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, उसमें हमने कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स को वहाँ पर, डिविजनल कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स को वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर रखा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो सुविधाएँ कमीशन इन लोगों के लिए देना चाहता है वो फील्ड में उनका पालन हो रहा है। इसी तरह से एक चेकलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर उसको नोटिफाई किया जाता है। हमने पीडब्ल्यूडी की मोबाइल ऐप बनाई हुई है, मगर ये उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि सब लोग वो जो हमने मोबाइल ऐप बनाई उसे पढ़ तो लें कम से कम कि क्या उसका किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही जो डमी बैलेट शीट्स हैं वो ब्रेल में बनाई गई हैं ताकि ब्लाइंड वोटर्स जो हैं उनको देखकर ये उसका वो आभास कर लें कि किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाएगा। वॉलंटियर्स की व्यवस्था कराई गई है, सेपरेट क्यू पीडब्ल्यूडीज के लिए रखी गई है। सभी जो पोलिंग स्टेशंस हैं ये प्रयास किया गया, प्रयास क्या कंपलसरी है कि वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होना चाहिए। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए हैं। जो कमिटीज़ हैं वो सभी इनकी व्यवस्था करने के लिए, सुझाव लेने के लिए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस प्रकार की कमिटीज़ बनाई गई हैं जो इसका पर्यवेक्षण भी कर सकें और सुझाव भी दे सकें। तो इस प्रकार से व्यवस्था अनेक की गई हैं। पिछले चुनाव में एक a very important initiative that we had taken was that if the PwD voter is not able to come to the polling booth, then the commission will go to his home to collect the postal vote. Now this is something very important, and maybe in days to come it will set up a new direction for this particular field. Then जो भविष्य में अब इस एरिया में अभी हमारे पास लगभग 82 लाख से अधिक वोटर हैं
मगर जैसे अभी ये बातचीत चल रही थी, बहुत सारे PWD वोटर्स जो हैं वो अभी छूटे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें घर घर में जाना है, गांव गांव में जाना है, गली गली में जाना है। अपने PWD आइकन्स यहाँ पर बैठे हैं, आप उनके लिए बहुत बड़े मोटिवेटर्स हैं। You are a very big source of motivation for them. So we have to ensure that people, they get motivated to follow your example and come over and vote in the open. So this is something very, very important. तो हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, CSOs का, NGOs का, इन सब का साथ लेना है और जो कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम्स हैं इनको यूटिलाइज करते हुए ये अपेक्षा करनी है कि अधिक से अधिक लोग आ पाएँ और उनके लिए हम एक पर्याप्त एनवायरनमेंट, एक वातावरण बना पाएँ. वी हैव टू फैसिलिटेट दैट whosoever PWD voter wants to come and vote, we are able to help him, to facilitate him to cast his vote independently, on his own, without any fear or favor. So I again thank all the PwD icons for coming over to this conference, and I'm sure that this would be a very good platform for mutual exchange of ideas, and maybe this sets up the agenda for us to take up in future. Thank you. Thank you so much, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey, sir, for your motivation and insightful words. And ladies and gentlemen, may I now request Honorable Commission Shri Rajiv Kumarji and Shri Anup Pandey, sir, to kindly launch the PwD app 2.0, sir, please. Now, sir will launch this app. This is PwD app 2.0 digitally. More on this, we have with us Section Officer, Accessibility Section, Shri Shashi Kumarji. PwD is an exclusive app developed by Election Commission of India to facilitate persons with disabilities. The PwD electors can use this app to avail various services provided by the ECI. Next slide. This app is initially launched prior to 2019 Lok Sabha election with a primary focus to ensure wider participation of PWDs in electoral process. Now, in order to ensure increased usage of PwD app by electors, the design, layout, and features have been revamped in all new avatar. The user interface of PwD app has been made more user-friendly, in which the user can navigate the app through screen reader, text-to-speech service, visibility enhancements, color adjustments, etc. PwD voters can use the app for all their needs, starting from the process of registration to availing pick and drop facility on the poll day. All the requirements of the PwDs have been taken into consideration while designing the app. The PwD voters must have a registered mobile number for which OTP will be sent to that, and they can avail the services in the app. All the services that can be availed are grouped under following 4 categories: registration, facilities, search, information, and complaint. Under registration tab, there are options related to PwD marking, new voter registration, request for any correction in the application, request for migration from one constituency to the other, and request for deletion, request for electoral Aadhaar authentication, and status tracking of the request made. Under facilities tab, the PwD voter can know the various facilities which are provided by the Commission for the sake of PwDs. Additionally, he or she can also raise the request for wheelchair, pick and drop assistance, and assistance in the polling booth. Under search tab, the PwD voter can search their name in electoral roll, know their polling station, locate their booth, and know the candidate details. Under the last information and complaint tab,
the user can register complaints, view videos and articles related to accessibility, and obtain any information on frequently asked questions, including the details of how to avail postal ballot facility by PwDs. The app is designed as a two-way interactive platform and is a one-stop solution for the PwD voters to avail the services from enrollment to poll day facilities. It is our constant endeavor to reach out to all, and we look forward to suggestions for improving the app further. The PwD app 2.0 shall be available in Google Play Store and App Store from 7th of November 2022. Thank you. Thank you, Shri Shashi Kumar ji. And may I now request Honorable Commission to kindly release the training module on sensitization of election personnel regarding PWDs and senior citizens. Sir, humble request, kindly release the module. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं मिसेस लता त्रिपाठी, सेक्रेटरी एक्सेसिबिलिटी डिवीजन। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य निर्वाचक नामावली को और अधिक समावेशी, सुगम्य, मतदाता अनुकूल और त्रुटि मुक्त बनाना है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसके प्रस्तावित कार्यकलापों में से एक है चुनाव की दृष्टि से उपेक्षित समुदायों जैसे दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना। सुगम्यता उपाय पर इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से सुगम्यता तथा कानूनी उपबंधों के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की प्रमुख पहल के संबंध में फील्ड स्तर BLO, ARO, ERO आदि कर्मचारियों के बुनियादी समझ से अवगत कराना है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आयोग की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके और दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सहभागिता के अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित और आश्वस्त महसूस कर सके। इसमें इंटरैक्टिव सत्र भी समाहित होगी, जिससे जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों के सामने आ रही समस्याओं और चुनौतियों के सहित फील्ड इनपुट एवं फीडबैक भी प्राप्त हो सके। मॉड्यूल में आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए स्थायी अनुदेशों को भी क्रियान्वित करने और राज्य एवं जिला स्तर पर सुगम्यता के संबंध में कम्युनिकेशन, सूचना, रिपोर्ट, केस स्टडी सुविधा आदि को साझा करने तथा क्रियान्वित करने का विशेष ध्यान दिया गया है। इस मॉड्यूल में सुगम्यता एवं समावेशन से अवगत कराया गया है। दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें दूर करने के बारे में भी बताया गया है। साथ ही इस विषय से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एवं देसी पद्धतियों से भी अवगत कराया गया है। आयोग की इस पहल का यह उद्देश्य है कि दिव्यांगजन अधिक से अधिक संख्या में निर्वाचन प्रक्रिया में मुख्य धारा से जुड़े और भारतीय निर्वाचन प्रणाली को पूर्ण रूप से समावेशी बना सके। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद लता त्रिपाठी जी। Our Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji is an IS officer of 1984 batch of Bihar Jharkhand cadre. Sir has got a long list of academic degrees. His BSc, LLB, PGDM and also done MA in Public Policy and Sustainability. In the span of 40 years, Sir has worked in numerous departments and ministries. As Finance Secretary, Shri Rajiv Kumar Sir was instrumental in introducing inter alia major initiatives and reforms in banking, insurance and pension sector. Shri Rajiv Kumar ji is an ardent trekker and has crossed number of passes across Himalayas in Ladakh, Himachal, Uttarakhand, Sikkim and Tibet. सर को ऊंचाइयों से बहुत प्रेम है और हम ये मान सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की जब बात आती है उसको भी नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए सर कटिबद्ध हैं। आप सबकी करतल ध्वनि के बीच मैं निवेदन करने जा रही हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर से। सर प्लीज आपसे निवेदन अपने आशीर्वचनों के लिए।
My colleague Shri Anup Chand Pandey ji, Honorable Election Commissioner of India, Secretary DPWD Rajesh Agrawal ji, पद्म श्री डॉक्टर नीरू कुमार जी, ईसीआई के और स्टेट्स के सभी पीडब्ल्यूडी आइकन्स, यहाँ मौजूद सभी मेरे मित्र पीडब्ल्यूडी आइकन्स, मंच पर विराजमान सभी ईसीआई के और अन्य पदाधिकारीगण, फ्रेंड्स और पीडब्ल्यूडी साथियों, ईसीआई की इस पीडब्ल्यूडी आइकन कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हृदय से स्वागत है और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आई हैव नो हेसिटेशन इन सेइंग that I feel happiest standing here in this conference. It is better than standing anywhere else in any other conference. I have attended many, including in the finance sector and this, that and the other, technology, finance sector and all. But जो आंतरिक सुख आप लोगों के साथ मिलता है, जो बल आप लोगों से मिलता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा सुखी प्रदान करता है आप लोगों के बीच रहने में. जो थोड़ी बहुत थकान होती भी है वो स्वयं मिट जाती है, ये मानकर कि थकान होने का कोई हक ही नहीं है आपको. तो उस सबको आप आज यहाँ आके आपने हमें सबको ये प्रेरणा और ये शक्ति प्रदान की है, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं. आई एम इमेंसली प्लीज टू वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट to this kind of a first of many others, but this kind of a conference of PwD icons. और इसके पीछे एक अवधारणा है, we have thought of various things in organizing this conference. I'll slowly explain why, but welcome to you all in this. ECI is pioneering in mainstreaming and deeply embedding the concept of practice of inclusiveness and accessibility. समावेशी और सुगम. समावेशी जिसमें देश के हर व्यक्ति को वोटर बनने का अधिकार सहजता से प्राप्त हो, एंड सुगम दैट वी प्रोवाइड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एट एवरी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. फ्रेंड्स, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड एब्सोल्युटली इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल processes of election, and I firmly believe, and actually it's my conviction, that disability is not at all an inability. It is the mistake which we commit. Dr. Neeru Kumar was also saying two things, equity and equality. Actually, it is I want to go beyond the equity to say that it is the higher ability of the disabled persons that is what we need to recognize. All of them have a higher ability than all of us who otherwise are considered to be able, as are termed as able. जो अभी हमने परफॉर्मेंसेस देखी, अगर उन परफॉर्मेंसेस की डेप्थ में जाएं तो क्या देखा हमने? एक बाहर की छोटी सी डिसेबिलिटी से अंदर की एबिलिटी कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा है, उसको समझने का मौका मिला. हमेशा मिलता है जब भी आपके साथ रहते हैं, और उसको सुनते सुनते, उसको देखते देखते मेरा मन किया कि मैं कुछ आज फिर दोबारा से एक छोटा सा एक्सटेम्पो लिखूं. तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ लिखा है, उसको पढ़ना चाहता हूं. हो सकता है कुछ जल्दी में उतना तार्किक ना हो. जो एबिलिटी की बात कर रहे हैं उसको मैं आवरण बोल रहा हूं. बाहरी आवरण आंतरिक सक्षमता और सुंदरता का मापदंड नहीं, ये नहीं हो सकता. मीन्स व्हाट इज योर इंटरनल एबिलिटी कैन नॉट बी जज्ड बाय द एक्सटर्नल वेरिएशंस. बाहरी आवरण आंतरिक सक्षमता सुंदरता का मापदंड नहीं हो सकता. गोया उनकी नासमझी जो अंतर की सुंदरता, अंदर के नृत्य, अंदर के संगीत को नहीं समझ सकते. आज हमने पीडब्ल्यूडीज का नृत्य देखा.
आज उनका म्यूजिक सुना, और उसी बीच में किसी ने हमें बताया उन्होंने कि कुछ लोगों को ताली बजाने का ये तरीका है। तो ये सोचने की बात है कि बिना सुने और म्यूजिक, तो ये तो कहीं आंतरिक म्यूजिक होगा, ये तो कहीं आंतरिक स्ट्रेंथ होगी, आंतरिक सुंदरता होगी, जो कि हमसे कितनी ज्यादा होगी। सो गोया उनकी नासमझी जो अंतर की सुंदरता, अंतर के नृत्य संगीत को नहीं समझ सकते, साकार में तो स्वरूप की सीमाएं हैं, उनसे क्या उलझना जो अंतर के अखंड विस्तार की यात्रा को समझ ही नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, all the differently abled friends of ours are, believe me, are able on a much higher pedestal than what we are. और एक उन्होंने शिव तांडव स्रोत भी किया, उस परफॉर्मेंस को आप अगर देखेंगे तो मैं मतलब ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, बट ज़्यादा दावे के साथ कह सकता हूँ हम में से 80% लोग वो नहीं कर सकते, वो स्टेज पे भी नहीं आ सकते, वो उसको याद भी नहीं कर सकते, उस परफॉर्मेंस को भी नहीं कर सकते। क्या कह रहे थे वो, उसको समझना भी जरूरी है। वो कह रहे थे गरिष्ठ रत्न रत्न्यो सुदिश दीक्ष पक्षियों, सारे रत्न सारी चीजों को छोड़ के द्विपक्ष पक्षियों, सबको एक समान देखें, इक्विटी। ऋणारविंद चक्षुओं प्रजा महीन महेंद्रियों, जो नीचे हैं और जो ऊपर हैं, जो प्रजा हैं, उन सबको बराबर समझें। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन, कब हम चुपचाप एक जगह में, कदा निलिम्प निर्झरी मतलब एक नदी के किनारे, निकुंज कोटरे वसन कहाँ हम अकेले एक कुटिया में निवास करेंगे, और शिवेति मंत्र मुच्चरम कदा सुखी भवाम्याम, कब हम सुखी होंगे उसका नाम लेते हुए। So this is what is the internal ability of our friends who were here and who were displaying that kind of a internal आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक समझ। जो बैंड अभी मेघालय से लेके आए थे, जो फ्रेंड्स ने यहाँ बजाया, जिसकी द डार्क बैंड एज यू कॉल इट, इज दैट बैंड ऑफ डार्क। सो उसके अंदर से जो म्यूजिक निकल रहा है, वो म्यूजिक तभी निकल सकता है जब आपके अंदर में स्पंदन हो रहा है। When your internal body is oscillating with music, then only it's possible. It's possible when you can distinguish between नाद एंड शोर, जो ध्वनि हो रही है, जो शोर मच रहा है, अनावश्यक शोर जो मच रहा है समाज में, उसके अंदर में उतर के ही वो म्यूजिक बन सकता है जो उन्होंने बनाया। हम उनके आभारी हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने एक बहुत हमारे ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बताया ऑलरेडी आपको कि चुनाव आयोग किस प्रकार से आप सबको सुगम और समावेशी चुनाव प्रक्रिया बनाने के लिए कटिबद्ध है। PwD ऐप भी उसी वजह से आया। अभी छत्तीसगढ़ से हमारे आइकन साहू जी ने कहा था कि रूरल एरियाज़ में कुछ अभी कमी है, ये भी कहा था कि डाटा के बारे में जोड़ें, और हमारे पहले से वोटिंग कर सकें, ये भी एक हुआ जिक्र। और जीजा घोष ने अभी बताया, बंगाल से है वो, उसने बताया आपने कितनी उसके मन में कितनी एक जिजीविषा है इस सिस्टम को सुधारने की। तो क्या बोल रही थी कि CRPF से उसने बात की बूथ पे जाके, उसने सिस्टम को सुधारने की जो सजेशंस दिए हैं, हम उस पर पेपर लिखवा के निश्चित जिया को विश्वास दिलाते हैं कि उस पर आगे काम करेंगे। इक्वलिटी और इक्विटी के ऊपर उठ के जो रेणु जी ने कहा, उसको तो हम लोग निश्चित वर्क करेंगे। सो जो माय कोलीग मिस्टर पांडे हैज ऑलरेडी टोल्ड यू द काइंड ऑफ फैसिलिटेशन, चाहे घर से वोट लेना हो, चाहे आपको रैम्प प्रोवाइड करना हो, चाहे PwD ऐप देना हो, चाहे उसमें सुविधा देनी हो, ब्रेल देना हो, वो सब तो करेंगे ही करेंगे। दैट्स व्हाट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड दैट वी वांट टू सेट, and that's really the minimum which we want to achieve, and achieve 100%. And as Rajesh ji said, we also want to become an institution which is sensitive, which is concerned, and which in its action show full sensitivity towards the PwD citizens, and through the process of election sets an example for the society and all other institutions to follow it. I am extremely thankful to all of you being here.
एंड आपके जो सजेशंस हैं और जो इससे पहले और बाद में भी बहुत सारे आए हैं, उन सबको कंपाइल करके फर्दर बढ़ाएंगे। राजेश जी ने कहा कि हम जो हमारे डाटाबेसेस हैं उनसे लिंक करके आप लोगों को वोटर लिस्ट में मार्क कर लें। तो ये काम हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से और जो भी डिपार्टमेंट स्टेट्स में देखते हैं कंसर्न, उनसे हम वो डाटा लेके अपने BLOs को देते हैं और कहते हैं ये आपका मेनू है, आपकी ड्यूटी है कि आप इन सबके घर जाएं। अगर कोई किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है तो घर जाके पूछें कि वो हमारा वोटर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें निश्चित रूप से वोटर बनाएं। तो ये सारे डाटाबेसेस को हम इकट्ठित करके अपने संज्ञान में लाके उसको यूज कर रहे हैं वोटर बनाने के लिए। बट एज आई सेड, वोटर बनाना, वोट डलवाना, वहाँ सुगमता करना तो बहुत हमारा कर्तव्य है, छोटी बात है, वो तो हम करेंगे ही, बट वी वांट टू गो मच बियॉन्ड दैट। एंड आई वुड लाइक टू एंड बाय अगेन एक किसी कवि की लिखी हुई एक शब्द है, मेरी नजरें भले ही कमजोर हों पर मेरे हौसले बुलंद हैं, मेरे पैर भले ही नाचते ना हों पर मेरे सपने अनंत हैं, मेरे शब्द चाहो मैं ना हो मेरे इरादों में बल अत्यंत है, मेरी दुनिया भले ही सूनी हो मेरा विश्वास सदा जयंत है, इस देश को मजबूत करने में मेरा भी बराबर का योगदान है। और इसको समझते हुए हम भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके इस योगदान को सर्वोपरि मानते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने सारगर्भित संबोधन के लिए। आपने जीवन दर्शन के अनेक आयामों से हमें पुनः अवगत कराया, पुनः उनसे जोड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवर ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी। एंड नाउ फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स मे आई इनवाइट ऑन स्टेज डायरेक्टर एक्सेसिबिलिटी एंड इलेक्शन प्लानिंग रिस्पेक्टेड मिस दीपाली मासेरकर जी। थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबा लिस्ट लाई थी मैं थैंक यू बोलने के लिए, बट सर आज हम सिर्फ एक जन का आभार मानेंगे। Heartfelt thanks to all the participants here, the PwD icons who have joined us physically, who have joined us virtually, and thank you so much. It means a lot. और the participants सर मैं कहना चाहूँगी ये 4 इंस्टीट्यूट से आए हैं, विकलांग सहारा समिति, साई स्वयं सोसाइटी, अखिल भारतीय विकलांग विधवा वृद्ध सेवा समिति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप। आप काफ़ी 1-2 बजे से आप यहाँ बैठे हैं और पेशेंटली आप ये सुन रहे हैं, तो आई थिंक दैट हमें ऊर्जा जगाई है आपने। एंड बहुत छोटा सा मैं कहना चाहूँगी फैसिलिटीज़ के बारे में, तो हमारे कमीशन ने कहा है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है, बस यही है, नथिंग फॉर अस विदाउट अस। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगी, हम इलेक्शंस लड़वाएंगे, बट हमारा नो योर कैंडिडेट में जब एक दिव्यांग आएंगे तब दैट इज आवर एक्चुअल सक्सेस। When we elect, when we see our MPs, MLAs, and maybe hopefully our Prime Minister as a Divyang, that is our success. So let us strive for that. And मुझे लगता है सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता है, और ये सच्चे प्रयास के साथ हम ये तो बस एक शुरुआत है. We'll go further and I'm sure we'll achieve greater heights. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Director Accessibility and Election Planning, respected Ms. Dipali Maserkar ji, for word of thanks. And ladies and gentlemen, with this we wind up our today's conference. I would like to thank all our dignitaries on stage and a humble request to all of you for the group photograph. आप सभी से निवेदन, कृपया एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मैं गुजारिश करूंगी। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में आप सभी का बहुत योगदान रहा। थैंक यू सर। आई वुड रिक्वेस्ट फॉर द ग्रुप फोटोग्राफ प्लीज।